Okay, great. So, hello everyone. Welcome all of you on Vedantu Commerce. You're watching a session of sample paper of mathematics, and it's me, Aditya, master teacher of mathematics and statistics. So, welcome all of you guys. I hope you are doing really great. And please let me know, are you guys excited to know? Because from the last 1 month, we are working on a topic integration. We have worked on other topics of term 2 as well as. तो अब आपके सामने recently CBSE has launched sample paper and we are going to discuss every single thing that is needed to are questions really going to be tough or it is going to be simple, what kind of questions is going to be come. So it will be really great and I will be really thankful to you if you will hit the like button, share your love and share this video to your friends, to your mates, everyone who is in class 11th or 12th. Class 11 kids students can know, you might know what kind of paper you are going to face in your class 12th. आप देख सकते हो किस तरह का पेपर आने वाला है. मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, पेपर मुश्किल है, टफ है, क्या है, कैसा है. और अगर आप पहली बार आए हो तो आई विल बी रियली थैंकफुल अगर आप सब्सक्राइब बटन को हिट करोगे. चलिए शुरुआत करते हैं. मैं भी पेपर खोल लेता हूँ और आपके पास पेपर एक सेकेंड ना, आपके पास पेपर अगर नहीं है तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो इस चीज को. ओके, चलिए शुरुआत करेंगे. तो टर्म टू सैंपल पेपर एनालिसिस ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स का पेपर एनालिसिस करना है हम लोगों को. नाउ एज आई हैव सेड यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम योर ऑफिशियल वेबसाइट और मैं भी इस पेपर को खोल लेता हूँ. देखिए जो जो पेपर में लिखा हुआ है मैं सारी चीजें आपके बारे में बताऊंगा इसके अंदर. The very first thing is this time paper is not objective. Now this time it's descriptive. That means you have to write down every single step that is needed to reach to the answer. In objective paper, you just need the answer by elimination approach, by any technique. Whether it doesn't matter. But in this case, you must have a logic, you must have a proper approach, and it should be written in a very neat and clean manner. Examiner should understand after going through this. This is the very first thing जो आपको यहाँ से समझनी है. ठीक है, इसके बाद अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं. अब यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं, मैं एक बार वो भी रीड कर देता हूँ. दिस पेपर इज हैविंग 3 sections ABC. 3 sections हैं. And there will be internal choices of the questions in the sections. In every section, there are 3 sections. Every section will be having the internal choices. Okay, and definitely as the last, as the objective paper, as a term 1, you are going to have a case based study paper. यहाँ पर भी आपका एक case based study होगा. तो it is not going to be difficult, है ना. आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है. केस बेस्ड स्टडी का मतलब ये है. ओके, ओ चलिए जस्ट गिव मी होल्ड ऑन अ सेकंड. यस, नाउ एज आई सेड, if you are having paper with you, आपके पास पेपर होगा. If you do not know, please let me know in the comment box. Please let me know in the chat box. If you're watching this later, I will be sharing the link with you. अगर आपको पेपर का लिंक चाहिए तो please let me know in the comment box. और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनके पास पेपर नहीं है, please download it from the official website or you can just Google search, you will get the paper. Otherwise, after the end of the video, I will be sharing the paper and if you will check the description box. Let me check. Okay, fine. So description box is not having, but yes, I will be sharing this question paper link by the end of this video. Okay. As I said, and it is written in the question paper. अगर आप देखो इसको, you are having 2 hours. आपके पास 2 घंटे हैं. Maximum 40 marks. So in 2 hours you have to score 40 marks. 40 marks. Interesting thing is, number of question is very less. Earlier it was 40 questions, 40 minutes, 1 question per minute, because you do not need to write down anything. All you need to do is just
solve it and get the answer. In this sample paper number, in this term 2 math sample paper, you are just having 14 question in 3 sections, और हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ सेक्शन 1, it is written and you can see on the slide, आप उधर भी देख सकते हो, it's exactly same. I'm reading the paper and you can read the slide, it is exactly same guys. Question paper contains 3 sections. Each part is compulsory. There is no choices between the sections. You have to attempt all the 3 sections. That's the first thing. Now, what is the difference in all these 3 sections? Section number A is of 2 marks every question. Each question in section number B is 3 marks, and each question in section number C is of 4 marks. Section A, 2 marks. Section B, 3 marks. Section C, every question is of 4 marks. That's the first thing. Now, section A is having 6 marks. Section A is having total 6 questions, but technically 7, because as I can see, there is an internal choice in question number 1. मैं आप रीड भी कर दूंगा आपको. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. आपको 2 चॉइसेस दी हैं, and I personally think it's a very nice decision, because you might feel integration is a wide topic than other topics. जैसे कि आपकी probability है, you know what is exact thing that you need to do. आपको मालूम चल जाएगा हर बार क्या करना है क्या नहीं करना. You will feel probability questions are much easier. Now question number 1 is of integration. There's an internal choice. Question is on the basis of trigonometry and substitution. अब इसी सेक्शन के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन आपका है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑल दे आर आस्किंग इज अबाउट ऑर्डर एंड डिग्री. इट्स अ, I would say, the simplest question, getting the degree and the order. Okay, now this is from the differential equation. Second number, now you can see the paper is beginning with calculus portion, integration, differential equation. Let's go to third question. Now third question is about the proof. What does it mean? The first 2 question was based on to find out the answer, find out the value, but third question is on the basis of proof, and that too from the chapter of vector. वेक्टर अलजेब्रा से आपका एक सवाल आया है कि प्रूव दैट. अब यहां पर अगर हम क्वेश्चन को रीड करके दिखाता हूं, इट्स मॉड्यूलस ऑफ ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस यूनिट वेक्टर ऑफ बी is equal to 2 cos theta by 2, where theta is the angle between them. अब आपको ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन, एक्सप्रेशन प्रूव करनी है पेपर के अंदर. ओके, अगेन इट इज ऑफ 2 मार्क्स, जस्ट 2 मार्क्स. अब आप वही फॉर्मूला लगाओगे अपना कॉस वाला. ठीक है. इसके बाद a डॉट b इज इक्वल्स टू a वेक्टर b वेक्टर cos थीटा वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो. फाइन. अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं. नाउ दिस माइट बी टफ टू प्रूव. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is find the direction cosines of the following line. It's a direct question, direct सवाल आपके सामने आया है. 3 minus x upon minus 1, 2y minus 1 upon 2z by 4. Now as I can see in this question is too simple. It's a direct question, but still many of you will do mistake in this. It's a tricky and the simple question. Question number 4 की बात कर रहा हूं. कैसे? Because they have given a simple question but with some twist. जैसे कि x 3 minus x है, तो मुझे लिखना है 3 minus x upon minus 1 को I should write it down as x minus 3 upon 1. Same way 2y minus 1 upon 2 should be written as y minus 1 by 2 upon 1. इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा. So you should know the exact equation. अगर आप वो रिकॉल कर पाओगे अच्छे से, then this question is going to be simple. As question number 5 and question number 6 is from probability. As I said, probability is one of the easiest chapter, and they have put the question of probability in section number A, and the vector algebra, 2 questions of vector algebra in section number A, and 2 questions from calculus, 1 from integration, 1 from differential equation from A. But what I can observe, if you will ask me what kind of question you can have in section number A, it can be probability, it can be a differential equation, and it can be a vector algebra. ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप मान के चलिए.
तो इस तरीके से आपके पास यू आर हैविंग 7 क्वेश्चन एंड यू नीड टू डू 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 वाज हैविंग अ चॉइस। नाउ अगर लेवल की बात करें सेक्शन नंबर ए की, सो आउट ऑफ 10 ऑन द रेटिंग ऑफ सिंप्लिसिटी, कंसीडरिंग 10 एज द मोस्ट सिंपल, 1 इज द टफ। ओके, तो आई वुड से इट्स समवेयर अराउंड 8 to 10। बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना पेपर इज गोइंग टू बी टू सिंपल, नो, है ना, because they are giving you 14 question in 40 minute 14 question in 120 minute. What is the, you can see it's somewhere around 9 minutes, approximately 8 to 9 minutes, 8 से 9 मिनट आपको दी जा रही हैं। समझ में आया? 8 से 9 मिनट आपको दी जा रही है यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए, मींस यू कैन थिंक for 2 to 3 minutes and write down your answer in 4 to 5 minutes। 4 से 5 मिनट का अपना आंसर लिखो। क्लियर? तो 6 सवाल है और अपने पास 10-10 मिनट के हिसाब से अगर हम बोल सकते हैं तो यू शुड कंप्लीट दिस पर्टिकुलर पोर्शन इन 30 मिनट टू 45 मिनट। 30 से 45 मिनट पेपर को खत्म कर देना, सेक्शन नंबर ए, नॉट मोर देन दैट, इससे ऊपर मत लेना भाई। सेक्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। नाउ कम टू सेक्शन नंबर बी। नाउ सेक्शन नंबर बी is of each question is of 3 marks। you will be having total 4 questions to do। आपको सिर्फ 4 सवाल करने हैं and there will be internal choice in 2 question। मैं आपको रीड करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, it's integration of x plus 1 upon x square plus 1x dx। ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, पेपर का डिस्कशन हम करेंगे डिटेल में, और डिटेल मतलब आई विल सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस वंस वी विल कंप्लीट द सिलेबस ऑन यूट्यूब। जैसे हमारा सिलेबस खत्म होगा मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, बिकॉज neither your school has completed your syllabus, so there is no point of discussion right now, but anyway I can tell you the level of difficulty। हम difficulty level पे बात कर सकते हैं। अगला सवाल आपका, find the general solution of the differential equation x dy by dx equals to y minus x sin by x। इसके अंदर चॉइस दी हुई है। सेक्शन नंबर ए, चॉइस वाज इन इंटीग्रेशन। सेक्शन नंबर बी, चॉइस इज इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगला भी आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, यानी कि आपको जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों पर काम करना है। इन डिफरेंशियल इक्वेशन मींस यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 is if a vector is not equal to 0 vector, a dot b is equal to a dot c, a cross b is equals to a cross c, then show that b equals to c again। Now if you will compare section a and section b, again a question of proof from the vector algebra। फिर से vector algebra पर proof आया है। आप you have to think the mentality of the examiner, आपको समझना पड़ेगा। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अब वो लेवल क्या, मैं आपको समझाता हूँ इसमें कितना लेवल लगेगा इसमें हम लोगों को। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ओके, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। r vector is equals to I plus j minus k and plus some again vector। r vector एक और वेक्टर दिया, you have given two line vector equation, और इसके अंदर भी चॉइस दी हुई है इस बार। Now you are having choices in 2 question। अच्छा, एक सवाल क्या पूछा है वेक्टर का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट्स फ्रॉम 3D ज्योमेट्री से सवाल आया आपका। एंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर 3D ज्योमेट्री। क्लियर? If we will analyze this section, what I can see, section number A and section number B both has given a choice in a question of calculus। अगर आप देखोगे पहले भी आपको इंटीग्रेशन में दिया, इन सेक्शन नंबर बी देयर इज अ चॉइस ऑफ देयर विल बी अ चॉइस बिटवीन 2 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। सो एक चॉइस तो आपको मिल रही है यहाँ पर कैलकुलस के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी बोथ आर हैविंग प्रूफ क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर। ओके, so it can be seen that examiner is more interested in giving you a question of proof from this particular chapter, उसको यहीं से दिख रहा है। Clear? 3D geometry से क्वेश्चन दिया है and it's not a difficult question, it's a lengthy question। तो क्वेश्चन नंबर 10 is bit lengthy, थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। इसके 2 पार्ट हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन।
दो लाइन की पैरेलल यहाँ पूछा हुआ है, यस, पैरेलल टू द लाइंस. ओके, सो यू कैन सी दिस सेक्शन इज नॉट दैट टफ, उतना भी टफ नहीं है. So we can rate out of 10, 10 consider as a most simple and 1 is the most tough. So I can see this section is somewhere around at the same level of section number A. उतना ही है, बस थोड़ा सा आप बोल सकते हो it's a bit lengthier than section number B. So difficulty level of A and B is quite similar. You can rate from somewhere 8 to 10 और 7 to 10 के बीच में difficulty level को set कर सकते हैं. मतलब बहुत simple भी नहीं है, it's a bit tricky and थोड़ा सा आपको lengthy feel हो सकता है in examination. अब चलते हैं section number C के अंदर, and now section number C is having a 4-mark question from the indefinite integration which is based on your mod function. Now if you do not have a knowledge of mod function, it's based on the property number 2. Okay, so guys, you have to read your properties. You can expect a tricky question. अब देखो, by chance ये सवाल बहुत easy है. This question is literally a simple question. Yes, अगर मैं इसको if I will analyze, the only difficulty is to break. The only difficulty as I can see with your perspective is to break this modulus sign. अगर आप इसमें compatible हो, अगर आप इसमें और घुसोगे आपको समझ में आएगा. They are asking your knowledge on modulus, and apart from that they are also asking your knowledge on the quadratic equation from your 10th and 11th class. Integration मान के चलिए, it's a negligible question from integration. Integration का सवाल बहुत कम है. यहां पर मेजर आपका टास्क है, कैन यू ओपन दिस मॉडुलस साइन एंड कैन यू जज where this expression x cube minus 3x square plus 2x is going to be positive or negative. कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, बस इतना सा मालूम करना है. एंड दिस इज अ पोर्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सवाल बन जाता है, फंक्शन का सवाल बन जाता है अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो. नाउ अगेन, अब इंटरेस्टिंग थिंग अगर आपने नोटिस की हो, अगेन दे हैव गिवन अ क्वेश्चन ऑफ इंटरनल चॉइस. सेक्शन सी की हम बात कर रहे हैं. सेक्शन सी के अंदर दे हैव गिवन अ क्वेश्चन of internal choice. There are two questions and we are having a choice. In question number 12 there are two questions and it's again a choice from a calculus. अब आपको समझ में आ रहा है कि कैलकुलस में चॉइस इसलिए दे रहे हैं because they are considering it's a bit you can say a difficult chapter in comparison to other. तो यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, बट ध्यान रखना कि if you cannot do one question, make sure that you can do the other question perfectly. तो do not leave this chapter at the loose end. Loose end पे नहीं छोड़ना है अपने को. Okay? Now they are asking a question or both the questions are on the basis of application of integration, and for sure they will be asking the question of application of integral in 4 marks in section number C. lengthy question होता है, ये अपना 4 marks में ही आएगा for sure. बस आपके पास choice रहेगा that what kind of question should I do. Okay, in question number 12, in first part of question number 12, the first choice is of to solve a line and a parabola. A line and a parabola. Second is a choice of circle and a line. Two lines basically. तो अब आपके पास चॉइस है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो. ओके, आप if doing parabola is obviously very simple in comparison to circle and ellipse, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो. Now next question is find the foot of the perpendicular from the point 1 to 0 upon the plane x minus 3y plus 3 2z equals to 9. Hence find the distance of the point 1 to 0 from the given plane. Distance पूछा है and foot of perpendicular पूछा है. थोड़ा सा lengthy होता है. Yes, it's quite lengthier than other section. थोड़े से लंबे questions है, but yes, again none of these questions are too difficult. कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो बहुत मुश्किल हो. Okay, because all these type of questions will be discussed in your class और होते आए हैं. If you will check out your previous year paper, you will found similar question. आप पुराने पेपर उठा के देखो, आपको बिल्कुल सेम सवाल मिलने वाले हैं. They are asking for the perpendicular. Earlier they have asked. They have asked the distance of a point from a plane. They have asked.
They have asked the angle between two lines or two vectors. They have literally asked them. इसके अलावा they have asked the area of a region having a circle or parabola or line. वही सवाल पूछते हैं. अच्छा, इसके अलावा they always ask shortest distance between two lines. A question from 3D geometry. They always ask to form a Cartesian in the vector form of a plane or a line. ये सब पूछते हैं. And all these things will be done in the class. तो ये सब पूछा जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है कि how to master. No, just attend your classes, make proper notes, and solve your NCRT again and again. This is the key to rock in the examination. अब आप ढूंढते रहोगे सर मैं इधर जाऊं, should I do this book or should I do this book or should I do this book, you will not reach nowhere. So it's advisable to all of you, do NCRT as many times as you can do. पेपर आपका पूरा सॉल्व होगा गारंटी वारंटी के साथ, है ना. इसके अलावा तो यहां पर अपन ने देख लिया एक, यहां पर अपने को एक अपने को यहां पर क्या मिला है, चॉइस मिला है. क्वेश्चन नंबर 12 अगेन इन द calculus portion. Now question number 14. Now question number 14 is a case based question. और ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी से सवाल है. What is the first question? What is the probability that the new policy maker will have an accident within a year of purchasing policy? Second question, suppose the new policyholder has an accident within a year of purchasing policy. What is the probability of that he or she is a accident prone? ये आपके theorems पर based सवाल है. They are based on the theorems. Direct questions from your theorems and will be discussed in the class. Exact same thing. We are doing it from many years and वही सवाल आने हैं. तो आपको बस क्लास अटेंड करनी है अच्छे से. Now, both these questions is of 2, each question of 2 marks. Now again, they are not lengthy, just there are 2 questions to do to fetch 4 marks. 4 marks लाने के लिए अपने को 2 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे. So overall, I would say overall paper is not at all difficult. It will be difficult for all those people who are thinking too much. जो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ना कि सर ये मुश्किल है, ये ऐसा है, वैसा है, मैथ्स है, तो भाई मुश्किल हो जाएगा. अच्छा, इजी कैसे बनाना है? इफ यू रियली वांट टू फेच, इट्स अ 40 मार्क पेपर. इफ यू रियली वांट टू फेच 35, मोर देन 35 मार्क्स, कुछ मत करो, एनसीईआरटी को लगाना शुरू करो. जितने क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लगाते रहो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम until unless you will become super confident. जब तक अंदर से आवाज नहीं आ जाए. ठीक है, तो सेक्शन ए, every question 2 marks. You need to attempt 6 questions out of 7 given questions. Internal choice is in calculus and a proof question from your vector algebra. Now summary. So basically section number A is of 12 marks. As I said, you should complete this section in 30 minutes approximately. 30 minute के around कर देना चाहिए आपको ये section. Section number B, you will be having 4 questions. Each question is of 3 marks. Again, this section should not take more than 30 minutes. Technically, अगर आप if you have done your NCERT 3 times or 4 times, उससे ऊपर नहीं लगेगा बॉस. ठीक है, तो ये भी 12 मार्क्स का सेक्शन है. And again, this section should complete in 30 marks. So basically, section A, section B, 10 marks should be done in around 1 hour. I'm talking about a student who has done NCERT 3 to 4 times. 3 से 4 बार जिसने कर ली होगी बेटा, वो इसको आराम से कर लेगा 30 मिनट के अंदर. Section C, which include the case study also having the 4 question. Every question is of 4 marks. मैं यहाँ पर 4 question नहीं मान रहा हूँ. I'm considering over here 5 questions. And these 5 questions that you have to attempt and you will be having some 16 marks. 16 marks का सवाल है. So you can consider this section is of around 45 minutes. Around. So as you can see, in 1 hour 45 minutes, you will complete this whole paper. There are total 18 questions. Okay, you are having internal choice in 3 questions. One question is having internal choice in section number A and 2 questions is having internal choice in section number B. इसके अलावा what is the interesting thing of this paper that both the proof questions has been asked from the vector algebra. ये कमाल की चीज जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व की. And one more important thing that we have observed, that internal choices out of 3, no, four questions are of internal choice. 1 question from section A, 2 questions from section B, and 1 question from section C. All 4 questions out of 4 questions, 3 questions have the internal choice from calculus, 1 from each chapter, 1 from integration, 1 from
differential equation, and one from application of integral. Now, another observation, you will definitely have a 4 mark question from application of integral. Okay. Most probably your case study will be from probability से आएगा, आप ये मान के चलिए, है ना, most probable chance यही है. इसके अलावा proof questions will be from vector algebra. You can expect direct question, formula based questions of 3D geometry. वही distance, वही foot of perpendicular, कुछ नया इसके अंदर कुछ नहीं है. पेपर डिफिकल्ट जो आपको लग सकता है, दैट कैन ओनली इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में ही लग सकता है, अदरवाइज होल योर पेपर इंटीग्रेशन एंड वेक्टर अलजेब्रा, क्योंकि वहां प्रूफ करना है. इन दोनों सेक्शन को छोड़कर अगर हम देखें तो अराउंड अराउंड 2 and 4 या सो 30 मार्क्स पेपर इज सुपर डुपर इजी डायरेक्टली. 10 मार्क के पेपर में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा. So you can consider this 30 mark question is super duper easy. There will be the direct question, and you have to use your extra part of your brain for to fetch this 10 mark. और वो भी आपका हो जाएगा अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. So out of 18 question, you need to do 14 question to fetch 40 marks. Do NCERT 2 to 3 times. Do proof questions and make sure your integration is where you going to struggle. So make sure that you are practicing on integration daily basis. एक दो सवाल लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम के अंदर. So this is all guys. So I hope आपको analysis अच्छा लगा होगा. Whatever is your question, do let me know. And if you are not able to have PDF of the sample paper, do let me know in the comment section. मैं आपको provide करवा दूंगा. So जाने से पहले motivational positive quote, some people dream of success while others wake up and work. तो बस पेपर आ गया है, निकल गया आपके सामने पेपर, इसके ऊपर काम करना शुरू करो. At least I am very sure integration has been finished in your schools. I will be including these integration questions in detail in the next upcoming sessions. मैं include कर लूंगा, तो we will be having a discussion. बाकी काम करना, मेहनत करना शुरू कर दो. Now there is no point of कॉलिंग अ सब्जेक्ट मुश्किल. कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, इट कैन बी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, और आई होप उनका भी आपको मिल गया होगा. पेपर एनालिसिस नहीं मिला तो जल्दी ही मिल जाएगा. ओके. So if any subject you are feeling difficulty, still you are having a time. What my observation for the board is, do your board books again and again. You will definitely have 80-90% marks आराम से आपके, कोई नहीं रोक सकता. This is all guys. I hope you really love the analysis. Still having a doubt? Let me know in the comment section. Stay tuned every day. I'm coming at 3:30 p.m. On Wednesday, Thursday, and Saturday, 3:30 live. And Monday, Tuesday, and Friday at 6:30 p.m. You are having a video on a topic. Stay tuned. And आज आपका एक टेस्ट हुआ था. Link is given in the description box, or you can check the community page of the channel. आपका ये टेस्ट हमेशा वीकली लेक्चर्स के बेसिस पर होगा. एज यू कैन सी, महाराष्ट्र बोर्ड पेपर 1 on FYJC and SYJC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो दोनों का पेपर था. एंड today itself for CBSE board or any other board can give this paper. Mock test for maths for class 11th and class 12th and class 12th. तो 3 पेपर आपके CBSE के हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट वीकेंड मॉक टेस्ट, और अभी आपको हर हफ्ते ऐसा मिलेंगे, तो आप बस अटेम्प्ट करते जाओ. यू विल बी हैविंग द स्कोर कार्ड आफ्टर द एंड ऑफ एवरी टेस्ट. इसके अलावा यू कैन एनरोल फॉर द वेदांतु's लाइव एंड इंटरेक्टिव कोर्स. आप जाकर चेक कर सकते हो. देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू विल बी गेटिंग benefits of the enrollment, having the separate faculty for doubt solving, having a taken care even after the lecture ends. उसके बाद भी आपका ख्याल रखा जाएगा. You will be having the notes, you will be having the test, you will be having the analysis report, you will be having the development, you will be having the mental support. बहुत सारी चीजें जो आपको इस enrollment में मिलने वाली हैं. You will be communicate in the lecture not just by typing your question, but by speaking your question. You can take a audio or the video chat. But right now you can enroll because you are having an opportunity to grab 50% discount on this by applying the code ADAPRO. तो अगर आप कोड लगाते हो तो a course which costs of 37,799, after having a discount and applying the code, there will be 71% off in total, and this package will be with you at 10,999. Vedantu Pro Classic, which is having extra
doubt solving on mobile application feature. Basically, this is something through which we can take care of your doubts, your queries even after the class. So if you want that feature, you can enroll for Vedantu Pro Classic. Lectures will be same, teachers will be same, test series will be same, analysis report will be of the same pattern. We will be having the same assignments, same notes, doubt solving in the class. You will be having one personal teacher in the classroom जहाँ पर आप अपना doubt पूछ सकते हो, you will get a reply. The only difference is of after the class feature. ये है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका डिस्काउंट लगेगा, यू विल बी हैविंग दिस पैकेज एट 12,500 अप्रोक्सीमेटली वेदांतु प्रो क्लासिक। अच्छा, अब एनरोल आप कर सकते हो। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइस। एनरोल करने का मतलब है यू आर बाइंग फॉर व्हाट यू आर पेइंग, for what we are paying, for what you are paying is you are buying the time of the experts. अगर आपको लगता है you should buy the time of the experts, if you are buying the time of the expert, that means you are surrounding yourself with a team of expert who will be helping you in your success. तो एनरोल करेंगे आज ही, 50% का ऑफ हम लेंगे। बेसिकली इट्स नॉट 50%, इट्स मच मोर देन दैट, 70% का ऑफ इन शॉर्ट। एंड दिस पैकेज विल कॉस्ट यू 10 rupees per day per subject. So this is all guys. I hope you really love this video. I will be really thankful for you if you will hit the like button. बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का प्यार देखकर. And I'm really excited for your comments in the comment box. कैसा लगा आपको analysis? What is the one thing that you are observing in your paper? आपका observation chat section के अंदर जरूर लिखना. I'm definitely going to reply on your observation because it is going to be helpful for others. बाकी लोगों के लिए आपका observation क्या पता बहुत काम का आ जाए, और हो सकता है कि आपका कमेंट शायद आपके पेपर के अंदर आपकी हेल्प कर दे, है ना। कई बार होता है कि यार जैसे मैंने आपको बोला कि यार वेक्टर अलजेब्रा का प्रूफ आएगा, तो अपन वहां पर प्रूफ के लिए मेहनत करेंगे। सो यू कैन लेट मी नो योर गेस। एंड दिस इज ऑल ऑफ द डे। शेयर दिस वीडियो फॉर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू ओवर हियर। फिर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल।